Hey guys, Rom Guruji here, back with another video, and this time we are talking about all the updates that have come for Origin OS after its launch. Now, you must be thinking it's already launched. What updates would come? Well, news keeps on coming and I keep on giving it to you. Now, if you like that, press that subscribe button and the bell icon for all the new notifications. And we just started our memberships with some cool exclusive perks. If you want to do that, press the join button and become our exclusive members. और आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे जाके आप ये वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं. Now let's get started with the updates on Origin OS, shall we? So talking about Origin OS, one of the most simple things that has happened is they have released a delivery schedule. Thank you Vivo for releasing it. So a lot of you want to know when will it roll out for IQOO 3? Well, simple thing, it will roll out after January 31st for IQOO 3 users because that is when the open or the public beta is starting. Another question a lot of people have in connection to Origin OS is when will Android 11 come for IQOO 3? Will it come with Origin OS or will it come with FunTouch OS? It will come with FunTouch OS. It will come in December. That are the inputs we are getting from the Vivo team, IQOO team, everywhere, right? So they are working on Android 11. Have faith, have patience. They're going to do it. But if you want Origin OS and Origin OS only, you're not in for luck because it is going to come basically in February 2021 for you. Now, will there be a switch to the stock Android? No. Sadly, after checking a lot of news channels, a lot of inputs, it has been confirmed that you will be able to switch to the standard FunTouch OS 11 look and not, and I repeat, not stock Android. So you can either switch between FunTouch OS or Origin OS looks, not both. A lot of people want to know whether the update size will be substantial. Honestly, yes, the update size will be pretty substantial because of a simple reason. There's so much animation, there's so much customization going on. You are bound to receive a huge update. So make sure you have your internet packs ready for it. Will Origin OS come to India? Yes, obviously Origin OS will be coming to India as it is their widespread and global change to the Android 11 platform. Origin OS will come to India. After that, a lot of people have been asking about Vivo V20, Vivo V19, Vivo V17. Now, I have shared the list again, and that list is there. You can go check it. If your phone is not in the list, do not expect the OS to come to you before the second quarter of 2021 or 2022, right? Any phone of this list that has completed 2 years of major Android updates will not be receiving the boost, right? Wow, that was a lot of news, right? Not really. Origin OS will also be improving the game mode, and the game mode will now have more power and more options to customize your gaming experience, including having transparent notification, blocking said notifications, increasing CPU performance, increasing RAM performance, increasing storage performance, optimizing it, having the new GPU cores that are coming in Android 11. So yes, there will be a GPU update coming to your phones too. So a lot of things are happening in the gaming. They're also saying that the touch response rate and the graphical processing is going to get better with Origin OS in Vivo phones. The camera is also going to get some new processing features. They're going to make the processing a bit better. You know, they've always been told that their camera lack a lot of things, so they're trying to change it, but this is something that I did not like. The UI will majorly remain same, right? But the customization or the optimization will be under the hood. Now, this is all that was going to change in Origin OS and the updates that I have received about it. So whenever new updates come, I will update you guys. That's all for the English version of this. Let's switch on to Hindi right now. तो गाइस कैसे हो? मैं हूँ रोम गुरुजी. मैं आज आपको बताऊंगा Origin OS के क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं. अपडेट्स मतलब वेट, अपडेट एक्चुअल में नहीं आया है. Origin OS लॉन्च हो गया है, बट उसके बारे में जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहली न्यूज़ है उसका रोल आउट कन्फर्म हो चुका है. रोल आउट कन्फर्म होने का मतलब क्या है? आप पूछ रहे थे IQOO 3 पे Origin OS कब आएगा. IQOO 3 पे ओपन बेटा Origin OS का आएगा फरवरी 2021 में. 2021 फरवरी में आपको Origin OS का अपडेट मिलेगा. और एक क्वेश्चन था IQOO 3 यूजर्स का कि Android 11 हमें पहले मिलेगा तो वो Origin OS के साथ मिलेगा या FunTouch OS के साथ मिलेगा या सीधे ही 2021 में मिलेगा. तो नहीं, आपको Android 11 दिसंबर में मिलेगा, FunTouch OS के साथ मिलेगा. उसके बाद आपके फ़ोन को स्विच किया जाएगा. इसके बाद और एक चीज़ जो काफ़ी रिसर्च के बाद दुखद तरह से मेरे को बतानी पड़ रही है, जो उसमें एक स्विच होगा वो स्टॉक पे नहीं जाएगा, वो FunTouch OS पे जाएगा. तो अगर आपको Origin OS में वो एक स्विच है जिससे पहले
पहले बोला जाता था आप स्टॉक लुक पे स्विच कर सकते हो, नहीं, आप फन टच ओएस के लुक पे स्विच कर पाएंगे और ओरिजिन ओएस के लुक पे स्विच कर पाएंगे। काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि ओरिजिन ओएस का अपडेट क्या बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, वो अपडेट काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इसमें एनिमेशन बहुत सारे हैं, कलर्स बहुत सारे हैं, वॉलपेपर्स बहुत सारे हैं, तो इसकी वजह से जो अपडेट है वो काफ़ी मैसिव साइज़ का हो सकता है। अपने इंटरनेट पैक्स रेडी करके रखिए। इसके बाद आते हैं वीवो V20, V70, V19, ये सारे जो फ़ोन्स हैं जो काफ़ी पुराने फ़ोन्स हो चुके हैं अभी और वो टॉप ग्रेड पे नहीं आते हैं वीवो के, उनको अपडेट होने में या तो सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 लगेगा या 2022 लगेगा। पर आपके फ़ोन्स को अगर 2 मेजर अपडेट अभी तक आ चुके हैं तो आपको ओरिजिन ओएस मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। इसके बाद जो नए नए रिफ्रेशमेंट्स या चेंजेस उन्होंने बताए हैं, एक तो गेम मोड आपका ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, बेटर होगा, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशंस, मिनी नोटिफिकेशंस, ये सारे के ऑप्शंस मिलेंगे। आपका ईगल आई इंप्रूव हो जाएगा, आपका जो टच सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होने वाली है, आपका इनफैक्ट प्रोसेसर, रैम, इस सब का जो कोलैबोरेशन है वो भी इंप्रूव करने की बात चल रही है कर्नल के थ्रू। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैमरा की क्वालिटी में चेंजेस आएंगे ऐसा उन्होंने बोला है, पर कैमरा का यूआई वही पुराना रहने वाला है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये सारे नए एज के लिए नेचर से कनेक्टेड होने वाले हैं, तो एक अलग ओएस की आइडियोलॉजी है, तो मेरे हिसाब से अपडेट्स भी उसी तरह से जल्दी आते रहेंगे। ये ओरिजिनल ओएस के बारे में सबसे क्विक आपके लिए सारे अपडेट्स थे। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हमारा एक्सक्लूसिव मेंबर बनना हो तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दो यार, इट्स नॉट दैट कॉस्टली। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।